So this is lecture 30 for the subject sensor and instrumentation based on your fourth unit. Okay, so in this lecture, we are going to cover this use of data sockets for network communication. Okay, so main topic is this is a data sockets. कि data sockets हमारे होते क्या हैं? Okay, but this is just for the application part. तो network communication जहाँ भी हम communication कर रहे हैं उस जगह पे data sockets का क्या application होता है? Okay, so network communication, nothing else, communication between the two networks. Okay, or you can say the communication between two computer systems, two machines. Okay, so अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो दिस इज जस्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, वो कम्युनिकेशन हमारे और आपके बीच में. ओके, सो एज ए कम्युनिकेशन की बात करें तो हमारे पास जो होते हैं सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स. ओके, सो सिंप्लेक्स मींस कि जहाँ पे आप केवल और केवल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मतलब आपने डेटा सेंड कर, ठीक है, अनदर ने रिसीव कर, बस. वो एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है, ट्रांसमीटर ने सेंड किया, रिसीवर ने रिसीव कर. सो दैट इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ द सिंप्लेक्स. लाइक आपने देखा होगा या मूवीज में देखा होगा पेजर सिस्टम. पेजर जो होते थे वो क्या मैसेज हमने अपना टाइप किया, सेंड करके रिसीवर के पास. ओके, सो वन वे कम्युनिकेशन, एक ने ट्रांसमिट किया, दूसरे ने रिसीव. और सेकेंड वन अगर हम बात करें तो हाफ डुप्लेक्स. हाफ डुप्लेक्स मींस कम्युनिकेशन एट ए टाइम, या तो सपोज एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर. ओके, सो ट्रांसमीटर एट ए टाइम ट्रांसमिट ही करेगा, उस टाइम पे रिसीवर ट्रांसमिट नहीं कर सकता. जब ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहा है, रिसीवर उस टाइम पे रिसीव ही करेगा, उस पर्टिकुलर टाइम पे वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता. सो एट ए टाइम एक ही आपका या तो ट्रांसमिट हो रहा होगा, या जो दो ट्रांसमीटर रिसीवर है वो ट्रांसमिट नहीं करता. अब आता है फुल डुप्लेक्स. फुल डुप्लेक्स लाइक एट ए टाइम यू कैन ट्रांसमिट एंड आल्सो यू कैन रिसीव द, ओके, रिसीव द कॉल्स आल्सो. लाइक अगर हम बात करें 3G 4G 2G जो भी मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं. ओके, सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द योर फुल डुप्लेक्स. ओके, सो ये दैट इज अ डिफरेंट थिंग फॉर जस्ट योर की कम्युनिकेशन होता है. ओके, नाउ अब हमें जो कम्युनिकेशन पढ़ना है, बेसिकली यहाँ पे हम जो बात करेंगे कि जो हमारे सिस्टम से डेटा ट्रांसमिट है, और इन अदर वर्ड्स की दो सिस्टम है, या अगर मैं बात करूँ कि लार्ज उसमें कि हमारे पास एक सर्वर है और उस सर्वर से जो डेटा है वो ट्रांसमिट हो रहा है. बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स मतलब हमारे पास बहुत सारे सिस्टम, अदर सिस्टम्स हैं, ठीक है, वो हमारे सारे कनेक्टेड किससे हैं, सर्वर से हैं, ठीक है, एंड सर्वर इज ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग द डेटा फ्रॉम डिफरेंट क्लाइंट्स. ओके, सो हमें यहाँ पे जो हम डेटा सॉकेट्स की बात करने वाले हैं वो इस रेफरेंस में करने को. ओके, सो लेट्स स्टार्ट सम बेसिक पॉइंट्स about your data sockets. Okay, so just I'm writing these important points. Okay, तो अगर हम बात करें कि जनरली क्या होता है कि हमारा एक सर्वर होता है, सर्वर रूम बोल सकते हैं, जहाँ पे हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स जो हमारे कनेक्टेड रहते हैं. तो जब भी क्लाइंट को डेटा चाहिए होता है तो वो क्या करता है, रिक्वेस्ट जनरेट करता है, और इन अदर वर्ड्स यू कैन वो रिक्वेस्ट सेंड करता है किसको, सर्वर. ओके, आई हैव रिक्वायर्ड दिस डेटा. ओके, तो सर्वर क्या करता है, उसके जो भी उसके रिगार्डिंग जो भी उसका वर्क ऑपरेशन उस सर्विस को एक्सेप्ट करता है, देन सेंड द डेटा. ओके, सो
अगर डेटा उसको सेंड करना है तो सबसे पहले उसके क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ेगा टू कनेक्ट विद द सर्वर. Okay, so point is, I'm just writing, so please note it down. A server runs on a specific computer and has a socket that is bound to a specific port number. The server just wait, listening to the socket for a client to make a connection request. Okay, so this is an important point. अगर मैं बात करूं, I have mentioned it has a socket, okay, and so I can draw two figure over here. That is, first one we have server, okay, and it has some port number. Okay, I hope you guys are from IT uh, department, so you know very well, okay, regarding this socket and port connection. Okay, so there is one client and it is also a port number. Okay, now it send a request. Okay, so यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, that is that will listen the, okay, so whatever it request, so connection request सबसे पहले वो क्या करेगा, send a connection request and server will listen the request. Okay, then if everything goes well, okay, the server accept the connection. Okay, so upon acceptance the server gets a new socket bound, okay, to the same local port. Okay, so socket is nothing else a address. So अगर मैं बात करूं जनरलाइज वे में, तो आपका सर्वर है, सर्वर के पास सॉकेट्स हैं, सो एवरी सॉकेट हैज अ डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट नंबर. ओके, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और हर क्लाइंट का एक पोर्ट एड्रेस होगा. अब उस सारे एड्रेस को आपको कनेक्ट करना है सर्वर से, देन यू हैव रिक्वायर्ड द सॉकेट फॉर कनेक्टिंग द सर्वर विद क्लाइंट. ओके, सो उस सॉकेट में हमारे बहुत सारे कनेक्शंस हो गए जिन्हें क्या करेंगे हम पर्टिकुलर, in other words we can say we have a lot, like suppose for example we have 60 one socket which have 60 port. Okay, so एक तरह से हम क्या करें, at a time we can generate or process request for these 60 clients.
ओके, सो व्हेन इफ एवरीथिंग गोज वेल, तो क्या करेगा ये जो सर्वर है, सेम थिंग आई एम राइटिंग अगेन, सो दिस इज पोर्ट सर्वर, this is, and here is your client port, so it will make a connection. Now this client send or transmit the data. Okay, so for transmitting and receiving the data, it is required to firstly make a connection. Okay, और उस connection को लिए we have to send the request. Request कौन से send करेगा? Client. Client means एक computer जिसपे हमें कोई भी process अपना करा रहे हैं. So ये data sockets का काम क्या होता है? ये हमारा mainly होता है कि to provide a connection between the server and client or between two clients. Okay, it is not necessary कि हमेशा सर्वर से कनेक्शन हम क्लाइंट के बीच में भी कर सकते हैं. ठीक है, सो एक तरह से हमारा क्या हो गया, एक मीडियम हो गया जिसके थ्रू हम अपना क्लाइंट्स को सर्वर को कनेक्ट कर रहे हैं फॉर सेंडिंग और रिसीविंग दी योर डेटा. दैट्स व्हाई इट इज नेम डेटा. सॉकेट्स मींस कनेक्शन प्रोवाइड कराना. सॉरी. Okay, so as a measurement point of view, ये अगर हम बात करें तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन योर सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन. ओके, सो अगर हम उस रिस्पेक्ट में बात करें, ठीक है, तो ऑब्वियसली सेंसर क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा होता है उसको सेंस करके वी डू द कैलिब्रेशन एंड वी स्टोर द डेटा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. ओके, नाउ उस डेटा को आपको कंट्रोलर में डालना है एंड अगेन यू हैव टू प्रोसेस दिस डेटा. और जहाँ पे बात करें कि किसी कंप्यूटर सिस्टम को आपको सेंड करना. ओके, सो अगर आपको लार्ज स्केल पे उस डेटा को सेंड करना, ठीक है, तो जब हम लार्ज स्केल की बात करते हैं दिस वी आर टॉकिंग अबाउट दी कि जब हमें उसे इंटरनेट पे सेंड करना. ओके, सो आई थिंक ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस आईओटी. ओके, सो आईओटी के बारे में आप सभी को पता है. सो वहां पे क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग द कम्युनिकेशन थ्रू द इंटरनेट और वी आर सेंडिंग आवर सेंसर डेटा जो आउटपुट डेटा है टू द डिफरेंट मशीन्स. ओके, सो वहां पे भी क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग द कैलिब्रेशन, वी आर डूइंग द मेजरमेंट. ओके, सो सपोज अगर आईओटी की बात करें कि आपको अब अपने होम ऑटोमेशन की हम सिंपल बात कर लेते हैं. सो आप क्या कर रहे हो, यू आर कनेक्टिंग योर डेटा, ओके, विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोकंट्रोलर एंड द इंटरनेट. ओके, सो जो भी डिवाइस है आपके ऑपरेटिंग डिवाइस है वहां से आप अपने जो रिक्वेस्ट को ट्रांसमिट कर रहे हो और जहां पे भी आपने डिवाइस कनेक्टेड कर रहा हो वो डिवाइस विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोकंट्रोलर उसको ऑपरेट. ओके, नाउ दिस इज ओनली वन. अब सपोज आपको यही डेटा, ठीक है, लाइक आपने अभी अपने होम ऑटोमेशन के लिए, ठीक है, अब अगर मैं वो आपसे बोलता हूँ कि इसको आपको स्केल करना है, जैसे आपने रिसेंटली अभी देखा होगा जो हमारे पास सर्विसेज आने लगी हैं वो आ रही है कि व्हेनेवर योर आरओ इज रिक्वायर्ड सर्विस, वो ऑटोमेटिकली क्या कर देता, इट सेंड द मैसेज टू द सर्वर. ओके, जहाँ पे भी जो सर्विस प्रोवाइडर है वहाँ पे आपका डेटा सेंड होता है कि नाउ सर्विस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर आरओ. सो वहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास एक नहीं होता, वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे होते हैं, थाउजेंड्स में होते हैं. नाउ इफ दे वांट टू एक्सेस द डेटा, आपसे ट्रांसमिट कर दिया, वहाँ पे वो रिक्वेस्ट चली गई. अब अगर उनको कम्युनिकेट करना है, सो
if they want to connect with the server, then obviously वहां पे क्या होगा, कुछ पोर्ट्स नंबर सॉकेट्स होंगे, उन सॉकेट के अंदर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट नंबर होंगे। तो उस सर्वर के पास सारी डिटेल्स होगी आपकी कि किस पोर्ट नंबर का, सपोज ये पर्टिकुलर लोकेशन है, अच्छा इस लोकेशन पे ये पोर्ट नंबर का इसका ये है, तो इसकी लोकेशन ये है। सो उनके पास सारा डेटाबेस है। So for connecting at the large scale, you have required the sockets. Okay, so सारा का सारा काम अब क्या हो रहा है, इंटरनेट बेस्ड हो रहा है। Okay, so this is just an example. ठीक है, so जब भी हम पोर्ट की बात करें, ठीक है, बेसिकली अब पोर्ट मतलब कुछ एड्रेस होना चाहिए। ओके, सो अगर हम इसकी बात करें, सो मैं उस डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ठीक है। सो अगर हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो देन वी हैव टीसीपी लेयर, एक्सक्यूज मी। ओके, सो टीसीपी हमारे पास होता है, ओएसआई मॉडल्स होते हैं फॉर कम्युनिकेटिंग द डेटा। सो उस डोमेन में नहीं जा रहे, बट इजिली आप क्या समझेंगे, फॉर एन एंड पॉइंट आपको अगर करना है, then you have to require one IP address and one port number. Okay? So IP address क्या कहता है, जैसे अभी मैंने बोला था आपको एक आरओ है, अगर उस आरओ की आपको लोकेशन आपको पता करना है, तो आप अपने डेटाबेस में पर्टिकुलर आईपी एड्रेस उसको असाइन करोगे, और उस आईपी एड्रेस से पता होगा आप डेटाबेस में कि इस आईपी एड्रेस का हमारा जो है इस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर का आरओ वहां पे इंस्टॉल है, उस पर्टिकुलर जगह पे इंस्टॉल। ओके, सो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट किसका आ जाता है, आईपी एड्रेस का भी आ जाता है। बट हमें उतना डेप्थ में नहीं जाना, हमें क्योंकि हमें बात किसकी करनी है, केवल केवल योर डेटा सॉकेट्स का काम क्या हो, डेटा सॉकेट्स करते हैं। ओके, सो अगर मैं इसका जनरल स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो क्या होगा, वी हैव सर्वर and we have different clients. Okay, so we can do the, we can design the in this way. So why I'm designing this, because this is a bus type. So you're sending the data, okay, not a bitwise, okay, in parallel. So let's say this is client 1, client 2, client 3, different clients. Okay, and here data socket. Okay, data server. Okay, so client 1, client 2, client 3, and this. Okay, now you have application. एक generalized manner application means you want to access the your application. Okay, so that is communicated over here. So okay, so in generalized form you can draw this diagram. Okay, where what is, there is different clients, and these clients are connected with the data bus for sending or sending the request। ओके, एक कनेक्शन रिक्वेस्ट करने के लिए
for server. Okay, and here we are doing some applications. Application is like अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो एक एप्लीकेशन था कि आरोग्य सर्विसेज वाला. Okay, so आपको इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट अगर एप्लीकेशन करना है, then obviously you have to connect it with, you have to provide data sockets, you have to server room or server. Okay, then different clients can get the access from this your server. Okay, so this is the generalized structure of the data sockets. अगर data sockets for network communication. Okay, data sockets का काम क्या होता है? केवल ये provide the connection between the client and the server. Firstly, he will send the request for connection. When what will happen? Server will listen the request. If the request is genuine, then server will respond the request and made a connection between the client and the server. So data sockets का काम ये होता है. पर नेटवर्क कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो उस ऑब्वियसली डेटा सॉकेट का जब तक आपको एप्लीकेशन नहीं होगा that there is no use of the data sockets. So use that to provide the communication, to send the data from one place to the another place. Okay. Now we do this the same thing in the industries also. Okay. जब आपको एक large scale पे data चाहिए होता है, जो transmit करना होता है. Okay. Like if I talk about uh, your सर्विस प्रोवाइडर, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, वहां पे भी क्या हो रहा है? दे आर ट्रांसमिटिंग द डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. Okay, so they are doing the same thing. Okay, so this is all about your data sockets for network communication.